Dumping of waste has been carried out in the outskirts as well as on vacant residential Residents plots. complain of a foul odour all day long. Dumped nearly 40,000 tons of waste in Pakistan last year. दिल तो मतलब बड़ा दुखी होता है. A beautiful village located near one of Pakistan's most culturally rich cities, completely at the mercy of policymakers. This is a true visage of nature itself, forgotten by law. Look, there's an apparent problem here. A problem that has plagued Kamra village to an extent where it has an implication on every aspect of life in the village. What is the cause of this problem? How do we solve it, and why hasn't it been solved before? Well, it all comes down to one thing, which is policy. Governmental bodies have tried to fix the pollution problem in Kamra, but they struggle to due to the issues they face in either their implementation or the policies they're trying to implement themselves. That's where we come in. We make a document known as a policy brief, which analyzes the problems that the villagers face and engineers specialized policies for those specific problems, allowing Kamra village to attain its once apparent glory. So what do we do in this scenario? We break it down into 3 steps. First, we analyzed the village, we collected our statistics, and we surveyed the villagers. The second thing that we do is, what do we do after that? We start breaking it down into subtopics. We break it down into subtopics, we analyze the cause and effect, and then the third step is where we move on to the implementation. In the implementation part, we're going to write up the policy brief. We're going to use the official format and templates, and then we're going to make sure that it gets to the right governmental bodies in this locality so that the problem is heard. ये इस गांव का मसला है कि यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि हमारा कंटोनमेंट के साथ किसी एक जगह पे नहीं, ये गांव का है मुख्तलिफ जगहों पे कचरे के हैं ढेर जो पुराने वक्तों में एक जगह मखसूस थी कि फिर वो उठा लेते थे खेतों में. जब ये मौसम आता था ना, गंदम कटाई हो गई, उसके बाद वो ढेर जो है कचरे के वो उठा के खेतों में फेंक के वो खाद बन जाती है. लेकिन अभी वो शापर ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए वो अभी एक तो इधर जो कामरा कलां है इसमें तो है एक रक्षा लगा हुआ है, वो कर रहा है, उसका कचरा उठाता है लोगों के घर से और दूर फेंक जाता है. यहाँ नहीं है. प्लास्टिक और कूड़ा जो गिराते हैं इसकी वजह से तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़मीन इधर खैर ज़मीन है वो भी ख़राब हो जाती है. प्लास्टिक वो ज़ाया नहीं होती ना, वो जब तक वो ख़त्म ना हो, जले ना, तो ज़ाया नहीं होती. उसकी वजह से जो है ना वो ज़री ज़मीन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. With all the pieces of the puzzle falling into place, we knew we had to get to work. We had to understand Punjab's policies and why they couldn't be implemented in Kamra village properly. And lastly, but definitely not least, we had to understand the circumstance of the village and apply that to all of our recommendations. वो गलती तो नहीं है ना. हाँ जी, ऐसे ही पड़ी रहती है. ये देखो सामने. हाँ, अपने तौर पे ये यहाँ पे जो है ना कटी कार के हम आग लगा देते हैं. अच्छा. लोगों में अवेयरनेस नहीं है. लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए और ताकि ये वो जो है ना इसको बेहतर से बेहतर कर सके. ये वही आप जो कह रहे थे कि शुरू से होता है. जी जी जी, वही ना ये कि जो है ना वो बड़े लोग जो है मतलब अपने माँ बाप और दादा दादी से आगे जैसे सब सारा चल रहा है, नीचे जो है ना वो बच्चों में भी वही चीजें शिफ्ट हो रही है. बच्चों में भी अभी मतलब अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है. कोई मखसूस जगह बनी हुई है इसीलिए तो यहाँ पे तो कोई नहीं. आप देख लें, आगे भी चले जाएं.
Our methodology entailed a very specific question set, which was designed to find out the root of the problem in Kamra village. Everyone was asked the same questions, and that helped us narrow down what was the main affectant of the issue. देखें जी, अब कहना तो नहीं पड़ता, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन ये गवर्नमेंट का ही मसला है। जब इलेक्शन की बारी आती है तो डीसी साहब आ जाते हैं और एसी साहब आ जाते हैं, बोलते हैं जी जो जो मसले हैं बताएं हमें, लेकिन बस उसके बाद गायब हो जाते हैं। वादे करते हैं कि हम ये बनाएंगे, आपको फैसिलिटी देंगे, कूड़ादान बनाएंगे, बड़े बड़े कचरा फेंकने की फैसिलिटी देंगे, साफ़ पानी देंगे, लेकिन सर ये झूठे वादे ही होते हैं और हम थक गए हैं सर, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ। Earlier we talked about the existing policies that Punjab might have implemented to curb Attak and Kamra villages' pollution problem. What are these policies and why did they not work? I'm specifically going to state the Punjab Municipal Fund Company's policy that they came out with in 2013, which critiqued several aspects of sewage disposal policies and recommended some things. However, it must be noted that these recommendations were not clearly implemented. Why were they not implemented? That is what we're specifically going to solve with our policy briefs and recommendations. We are going to curate these recommendations as per the necessity in Kamra village and the circumstance. For example, educational schemes stated into the 2013 Punjab Municipal Fund Company's policy brief weren't properly implemented because of the school system in the area and the lack of willingness of villagers to be educated about these things. Thus, we are going to address these problems and apply recommendations as per their situation. The policy brief itself is broken down into 3 categories. First is the executive summary, where we give an overall review of Kamra village, its innate importance, and why this problem is so severe. The second is the scope. This is where we actually give context to the problem. This is where we actually apply our statistics, and this is where we make our arguments. And the third portion being the recommendations. In the recommendations portion, we will critique the already existing policy that's in place by the Punjab government while applying our own new directives that we will be presenting. यही अपने तौर पर तो यही कोशिश करते हैं, जला देते हैं। जलाना तो इसका हल नहीं है, इसका हल तो यही है कि इसे बेहतरीन तरीके से जो है ना तल्फ किया जाए। हमने ये एप्लीकेशन दी है GBTI वालों को, GBC वालों को, नेर वालों को। उन्होंने कहा है कि हमें जो है ना इस चीज़ की मंजूरी दें कि जी हम 1-2 जो है ना इधर जो है ना कचरा कुंडियाँ बनवा लें, ताकि कचरा एक ही जगह इकट्ठा हो, साथ साथ ज़मीन ख़राब ना हो, ताकि उधर से हम उठा कर उसे अच्छे तरीके से डंप कर सकें। Days and days of extensive research and careful deliberation, we've decided upon a 3-fold policy for Kamra village. This new policy will entail the introduction of landfills in areas like these. As you can see, this area in particular is a trouble spot. There's burning of garbage present, which causes an unholy amount of sulfur and carbon emissions in the air. There are glass bottles, syringes and plastic bags that don't decompose. So the introduction of a centralized landfill that garbage trucks can come and collect the garbage from and take it away from the village would be a perfect solution for a situation like this. ये अब खेतों का जो गंद फेंकते हैं सारे जलाना ही पड़ता है, क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं है। उसकी वजह से बड़ी गंदी सांस लेने की बीमारियां हैं, स्पेशली बूढ़ों को बहुत मुतासिर करती है। एस्थमा आपने सुना ही होगा, हम भी सुनते आए हैं, सांस लेने का जो मसला होता है तो वो बड़े लोगों को है जी। हाँ जी। So for the second point, I talked about sanitation trucks earlier. Now how will these sanitation trucks be implemented? First, we get the funding. The funding will be allocated by the Punjab Municipal Development Fund. We will get the funding allocated to the various districts of Kamra and Attak and these villages on their outskirts that are usually neglected. The trucks will consist of a staff of 5 to 10 people that will come in shifts throughout the day and empty the landfills that will be implemented. अवेयरनेस नहीं है आपके जितने भी रिहायशी हैं उन लोगों में कि इसको कहाँ फेंका जाए या कोई ऐसी मखसूस जगह बनाई गई हो इस चीज़ के लिए? सर हम जितना करना चाहें हम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर तो है ना कि वो कुछ करे। हम बहुत मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है, हम रो रो के थक गए हैं। हम कहते हैं कि कुछ करें, हमारे अंदर अवेयरनेस बहुत है, मगर कोई हमें आगे से सपोर्ट भी तो मिले, आउटपुट नहीं मिले। कुछ हमें मिले तो सही, जो हम कहाँ फेंकें कचरा, आप हमें बताएं।
for the third and final policy point, we're going to be pushing for an increased awareness and education perspective. First, we're going to go and approach the Union Council of Villages here in this district, and we're going to be asking them to hold conventions for the people of Kamra so that we can show them the downsides of burning trash. Second thing that we can do is that we will be going into schools and holding awareness campaigns to educate the youth on why these bad sanitation practices are not sustainable. कि जो हमारे जो है ना इन हालात को देखते हुए ये काम जल्द अज जल्द जो है ना करें ताकि कामरा की आवाम राहत और सुकून की जो सांस ले सके. you